Hi everyone, let us understand what is atom. पूरी की पूरी दुनिया is made up of atoms. Everything which you can see, you can feel it, touch it is made up of atoms. Since atom is the smallest unit of matter, you can also say the whole universe is made up of matters. Now what is matter? Anything which has mass and it takes up space is called matter. Now, there are three states of matters: solid, liquid, and gas. Okay, where atom is present. Now, you can also say atom can be seen in the form of ions, molecules, and elements. So by the end of this video, you will be in a position to answer that what is difference between atom, molecule, and elements. Okay. Now when I say elements, the first modern periodic table comes into my mind. So here is the modern periodic table where all the elements are present. There are total 118 elements present on your screen. Okay. So from here, I can say here is my hydrogen, lithium, beryllium, sodium, magnesium, and all of these elements are there. Now in this element, few are metals, few are non-metals, few are metalloids, few are gas, and etc. etc. So up to date, there are 118 elements discovered. Okay, which all are presented on your screen. ओके, तो अभी तक हमने ये तो पढ़ लिया कि पूरी की पूरी दुनिया इज मेड अप ऑफ एटम्स. नाउ लेट अस सी व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एटम्स. एटम किन चीजों से बना हुआ है? तो एटम इज मेड अप ऑफ थ्री पार्टिकल्स: इलेक्ट्रॉन which is negatively charged, proton which is positively charged, and neutron which has no charge. Now, since charge is the intrinsic property of matter, what do you mean by intrinsic property? ये ऐसी प्रॉपर्टी है where research is not possible. जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया तो उसमें रिसर्च करना इज नॉट पॉसिबल बिकॉज चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, और आई कैन से इट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. जैसे मास इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, वैसे ही चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. सो एटम तीन चीजों से बना हुआ है: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. Here is the structure of an atom on your screen. Where this is my electron. तो ये सारे के सारे जो ग्रे कलर के मुझे दिख रहे हैं सर्कल्स आर नथिंग बट माय इलेक्ट्रॉन्स. ओके, दिस इज माय न्यूक्लियस. एटम में न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ओके, when proton and neutron comes together they form nucleon. ओके, एंड पूरे न्यूक्लियन को एक नाम दिया है न्यूक्लियस. ओके, so this is my first orbit. This is my second orbit. Now I'll play one video and we will understand the working of an atom. कि exactly atom में हो क्या रहा है. Okay? Okay. Here is the working model of an atom. सबसे पहले मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है न्यूक्लियस के अराउंड गोल गोल घूम क्यों रहा है? दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन आता है कि जो दो ऑर्बिट है, दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिट एंड दिस इज द सेकेंड ऑर्बिट, उन बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं, या फिर एग्जैक्टली वहां पे है क्या? वहां पे कुछ भी नहीं है. आंसर है वहां पे कुछ भी नहीं है. इट इज वैक्यूम. ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. लेट्स सी. So there are two reasons why electrons are moving around the nucleus. Reason number one, जानने से पहले let us understand what is the property of charge. What is the property of charge? Like charges repel and unlike charges attracts. Like charges मतलब क्या? दो सेम चार्जेस जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल होते हैं, दूर जाते हैं. नेगेटिव नेगेटिव वो भी रिपल होते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं. दिस वाज द रीजन नंबर वन. यहाँ पे इफ यू सी कि ये वाला जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो इसको धक्का मारेगा. क्यों? क्योंकि दोनों की दोनों नेगेटिव है. फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको धक्का मारेगा, यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको धक्का मारेगा. तो सो ऑन कैन आई से उसके वजह से सारे इलेक्ट्रॉन्स अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, है ना. दिस वाज द रीजन वन व्हाई इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग. सेकेंड रीजन इज कि व्हाई दे आर मूविंग इन सर्कुलर डायरेक्शन. ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा कि हमारा जो न्यूक्लियस है ना, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. एंड प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है.
और इलेक्ट्रॉन्स क्या नेगेटिवली चार्ज है। सिंस प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, वो लोग अट्रैक्ट करेंगे। और जो न्यूक्लियस है हमारा, वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की कोशिश करेगा, बिकॉज न्यूक्लियस का वेट ज्यादा है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो कहना से एक रेडियस फॉर्म होगा, एंड उस रेडियस की वजह से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स गोल गोल घूमने लगेंगे। दिस इज द रीजन व्हाई इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, या फिर वो जो ऑर्बिट है उसमें घूम रहे हैं। ऑर्बिट इज नथिंग बट इट इज द इमेजिनरी पाथ which is they are moving due to force of attraction, from the nucleus electrons are been pulled, but since there are more electrons in the orbit, इसके वजह से they are not leaving their orbit, or else they are not completely attracting towards the nucleus. This is the reason why electrons are moving in the radius. Now, okay, so here are the some of the examples of element which I have actually taken from modern periodic table, where you can see different different elements का atomic structure कैसा होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का अलग है, सिलिकॉन का अलग है, कैडमियम का अलग है, बट कैन आई से all of this are made up of atoms only, जिसमें एक न्यूक्लियस है, किसी में इलेक्ट्रॉन है। ओके, so these are the examples. So here is the difference between what is atom, what is molecule, and what is element. So atom तो हमने पढ़ लिया कि atom क्या होता है। ठीक है, atom is nothing but the basic unit of matter. Now what is molecule? जब बहुत सारे atoms एक साथ आ जाते हैं is called molecule, and जब बहुत सारे molecule एक साथ आ जाते हैं तो it is called an element. Okay, so element, it can be of solid state, liquid state, or it can be a gaseous state as well. Okay, so that was all for that day. Thank you.